The next contact force we will discuss is frictional force. Okay. So what is frictional force? We should understand first. It is the component of contact force tangential to the surface. Okay. So suppose there is a block and it is moving in this direction, suppose with speed v. Okay. Then this surface is applying some contact force. Obviously, the first contact force, which is perpendicular to the surface, is, we know, is what? It is normal, that is in the upward direction, right? And the other contact force which is possible on this block due to the surface is called frictional force. It acts tangentially to the surface, tangent to the contact surface, okay, in this direction. Actually what it does is, first read that, it opposes the relative motion of the two surfaces in contact. Like in the previous slide we just saw that these two blocks are in contact, okay, and if this block was not moving, there was no tendency of motion of this block, then this friction would not arise, okay, because there is no tendency of relative motion between the surface and the block. They are not trying to move with respect to each other. But as soon as this block starts moving in the forward direction, what happens is this surface tries to stop the relative motion. This surface tries to stop the sliding of the block on it, right? So let me explain. Suppose there is a block, this is a platform, okay, and this block is moving in that direction, in the direction of motion, okay, as shown. And how is it moving? We are trying to push it. There is a pushing force also on this block, okay. So this surface will try to stop the relative motion between this block and the surface. Why so? Okay, now let me tell you what is the reason for this frictional force. Let us understand very slightly, okay. Any surface has some irregularities at microscopic level. However smooth the surface may appear to you at first look, but any surface has some irregularities, some zigzag shape, okay. And when we put another block on this surface, suppose, and it also has some irregularities of its own, okay. So when the upper block tries to move in the forward direction with, suppose, some velocity v, then what will happen? These irregularities will stick with each other, okay, and cause some resistance in the motion. This resistance of motion, that is that resistive force, acts always tangential to the surface, okay. So friction in this case, small f I am denoting for friction. This friction will act in the backward direction because the block is moving in the forward direction, okay. See, similarly, suppose if there was an inclined plane, I will take one more example here. Suppose this was an inclined plane and this is also rough, okay, and I put a block on this to slide down, है ना? It is sliding down due to its own weight. Then in which direction will this friction act? Along the tangent in the backward direction, okay, because this block is moving with respect to this wedge in the downward direction. So to stop this rough surface will apply a friction force in the upward direction. So friction always opposes slipping of two bodies over each other, okay. So actually friction we will talk later on in great detail, so we need not study it right now. We just have to understand that it acts always parallel to the contact surface along the tangent, right? So the next very important thing in this chapter is Newton's laws of motion, right? You know the name of scientist Newton. He gave very important 3 laws, okay, which are basically the I would say that they are the mother of mechanics, okay, these laws. Because of these laws only we are able to explain most of the mechanical situations, okay.
So I said just now that there are 3 laws. So we should start with the first law. Okay, Newton's first law of motion. You have studied this in previous classes also, so I should directly start with the statement. Every body will remain at rest or continue to move with uniform velocity, okay, unless an external force is applied to it. What does this mean? Suppose in space where no other body is in contact with this block, if you leave it there somewhere in the universe, this block is there isolated from any other body, कोई भी दूसरी बॉडी इस पर फोर्स नहीं लगा रही है, उस केस में बेटा मैं इससे पूछूं कि विल दिस बॉडी मूव, तो इट विल से नो आई कैन नॉट मूव बिकॉज नोबडी इज पुशिंग मी, राइट? ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि मोशन को स्टार्ट करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मोशन, द थिंग रिक्वायर्ड इज कॉल्ड फोर्स. ओके, फोर्स ही बेसिकली किसी भी मोशन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है अगर बॉडी रेस्ट पर है. सिमिलरली सपोज कि कोई दूसरी जगह पे बात करते हैं जाकर के, एक ब्लॉक है जो एक स्ट्रेट लाइन में v वेलोसिटी से जा रहा है, इट इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन में v वेलोसिटी के साथ सीधे जा रहा है, राइट? इस पे कोई भी दूसरा फोर्स नहीं है, कोई नॉर्मल फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है. इन दैट केस इफ यू आस्क इट कैन यू स्टॉप ऑन योर ओन, तो दिस ब्लॉक विल से नो आई कैन नॉट स्टॉप बिकॉज आई रिक्वायर सम फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. मतलब उसकी खुद की वेलोसिटी चेंज करने के लिए, तेज करने के लिए भी फोर्स चाहिए, स्लो डाउन करने के लिए भी फोर्स चाहिए, इवन टू चेंज इट्स डायरेक्शन फोर्स विल बी रिक्वायर्ड. तो बेटा इसके लिए अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो भी ये अपने मोशन को चेंज नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वी अप्लाई सम फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, राइट? तो ये कौन सा स्टेट ऑफ मोशन हो गया? ये हो गया रेस्ट, और ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन. तो दिस इंडिपेंडेंटली बोथ ऑफ दीज मोशंस विल कंटिन्यू. ये रेस्ट पर रहेगा तो रहेगा, दिस विल मूव इन यूनिफॉर्म मोशन टिल इटर्निटी. कब तक? हमेशा, टिल इनफाइनाइट टाइम, अनंत काल तक ये साथ ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि कोई मोशन चेंज करने वाला फोर्स ना आ जाए, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ फोर्स टू चेंज इट्स मोशन. जैसे कि अगर स्ट्रेट रोड है बेटा सपोज एंड देयर इज अ कार्ट, एक सिंपल सा कार्ट है हमारे पास, ठीक है? ये आगे इसको धक्का दे करके छोड़ दो, पुश इट विथ सम वेलोसिटी, ओके, लेट इट गेन सम वेलोसिटी, पुश इट, v आ गया इसके पास, अब छोड़ दो इसको, तो विल इट स्टॉप ऑन इट्स ओन? नो, ये हमेशा चलता रहेगा दूर तक. सपोज देयर इज अ राइट टर्न लेटर ऑन, आगे जाकर के एक राइट टर्न आ जाता है, तो क्या ये अपने आप अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है? इट कैन नॉट. व्हाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स a force, an external force to change its state of motion. ठीक है? जब तक इस पे कोई फोर्स नहीं लगाओगे इसका मोशन चेंज होने वाला नहीं है. ओके, तो आगे बात करते हैं. जैसे सपोज करो एक बॉल रखी है, ठीक है, ग्राउंड में एक बॉल रखी है और उसको छोड़ दो आप, डू नॉट टच इट. विल इट ऑटोमेटिकली रीच द गोल? इट विल नेवर, राइट? तो आपने क्या किया? इसको पुश कर दिया हवा में, ठीक है? अगर वहां ग्रेविटी नहीं होती, if there was no gravity, understand this, gravity is also one type of external force only. तो अगर ग्रेविटी नहीं होती, इमेजिन करो, तो वो क्या होता? स्पेस में चला जाता डायरेक्टली, ठीक है? लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है तो इट विल फॉल डाउन सम प्लेस, और वो फिर जाके कहाँ घुस जाता है? इनसाइड द गोल पोस्ट, अंदर चला जाता है. बिकॉज इट केम डाउन जस्ट बिकॉज देयर वाज ग्रेविटी. अगर ग्रेविटी भी नहीं होती तो फिर ये यूनिफॉर्म मोशन शुरू कर देता, स्ट्रेट लाइन में v वेलोसिटी से इनफाइनाइट डिस्टेंस चला जाता. तो यहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स आ गया, विच यू हैव सीन दिस एग्जांपल, राइट? तो इसमें कुछ भी नया नहीं है. और इस लॉ को, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. इसका नाम क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है?
लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है भाई? सो यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, इनर्शिया. व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है. लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज इनर्शिया. देखो, आई विल राइट दिस नेम. इनर्शिया क्या है वो समझ लेते हैं. इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. वो अपने स्टेट ऑफ मोशन, मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो वो उसका स्टेट ऑफ मोशन है. अगर वो स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी v से चल रहा है तो वो उसका स्टेट ऑफ मोशन है. ठीक है, तो उसमें चेंज को रेजिस्ट करता है. ठीक है, और इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होता है? मास. ठीक है, इनर्शिया क्यों आता है? ड्यू टू मास. ठीक है, सो आई कैन से कि जो भारी बॉडी होगी, द हेवियर द बॉडी, मोर द इनर्शिया इट हैज. राइट, जैसे मैं पूछूं कि इफ दिस इज अ प्लास्टिक बॉल सपोज, ठीक है, प्लास्टिक बॉल है, इमेजिन करो, ऑफ सपोज 0.5 kg. इमेजिन करना है, यू जस्ट हैव टू इमेजिन इट. राइट, तो अगर ये 0.5 kg की बॉल है और मैं बोलूं कि आपको उसको 10 मीटर्स तक यू हैव टू पुश इट, तो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन हाउ मच फोर्स यू विल रिक्वायर टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. राइट, सिमिलरली सपोज कि मैं दूसरी एक बॉल ले आता हूं, सपोज मेड ऑफ स्टोन. अगर मैं यहां पे एक स्टोन बॉल ले आऊं, राइट, सपोज इट इज ऑफ 10 kg, and now if I ask you to push it to 10 meter distance, so can you imagine how much effort you will require to push it? So inertia is measured with mass. This has more inertia. Why? Stone ball will have more inertia because its mass is high. So to bring it into motion, more force will be required. More external force will be required to push it into motion. But for a plastic ball of 0.5 kg, it is easier to put it into motion. Right? तो मैंने यहाँ पे बोला कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, इस स्टेटमेंट का नाम क्या होता है बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया होता है. ठीक है, यहाँ पे हम इनर्शिया प्रॉपर्टी की बात करते हैं उस बॉडी के लिए.